Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. Students, in our today's class, we are going to learn the fourth unit environment, and this part B reading, The River is the poem. From 9th class English, we are going to learn this poem, The River. Here, बी रीडिंग द रिवर रिटन बाय C.A. बाउल्स. तो आज की हमारी इस क्लास में हम 9th क्लास की इंग्लिश से पोएम द रिवर पढ़ेंगे. द पोएम रिटन बाय कैरोलिन एन बाउल्स was married to Robert Southey, who was the poet laureate of Britain. She wrote various other works including chapter on churchyard and tales of the factories, and some glossary words and their meanings from this poem, The River. Now we are going to read the poem. Let's start. River, river, little river, bright you sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping over rocks by rose banks sweeping, like impetuous youth. River, river, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime. River, river, headlong river, dawn to dash into the sea. Sea that line hath never sounded, sea that sail hath never rounded, like eternity. It's our poem. Now let's start our glossary words. Our first word is sparkle. Sparkle means reflect, shine, यानी कि चमक. Next is foliage. Foliage means leaves, यानी कि पत्ता. Next is glancing, means taking a brief look, मतलब सरसरी नज़र देखना. Swelling. Swelling means increasing or expanding in size, मतलब है worm, सूजन, bump. Next is brawling, means struggling, यानी कि जिद्दोजहद करना, कशमकश करना. Rose banks means river banks where roses flowers appear along, मतलब गुलाब के दरिया के किनारे लगने वाले फूल, गुलाब. Impatious. Impatious, rash, acting quickly without thinking, यानी कि तेज, पुरजोश. Next is brimming. Full, full of, यानी भरा हुआ. Tending. Tending, going in a particular way, यानी कि एक ख़ास तरीके से जाना. Mortal prime, the best part of one's life that cannot last forever, यानी हमेशा के लिए नहीं रह सकता, नहीं रहने वाला. फ़ानी. फ़ानी शख्स या फ़ानी प्राइम. Headlong. Headlong, with the head first and the rest of the body following, यानी कि सर आगे करके चलना, सर के बल चलना, जल्दबाजी से चलना. नेक्स्ट हैथ. हैथ यानी हैज़. हैज़ यानी कि है, के पास, इसके पास या उसके पास. इटर्निटी, लाइफ कंटिन्यूइंग विदाउट एंड आफ्टर डेथ, दायमी, हमेशा रहने वाला. सो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल अंडरस्टूड द ग्लॉसरी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. आपने इनके अल्फाज और मायनों को अच्छे से समझा है, और पोएम जो मैंने यहाँ पे पढ़ी है वो भी आपको समझ आई है. सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.